Cambridge IGCSE केमिस्ट्री डिजिटल बुक। आज हम इसका वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक। दिस इज ऑनलाइन सोर्स जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है उसी की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो वी विल डिस्कस दिस चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर में there are many different kinds of matter, or matter, all things are made of matter है। जितनी भी दुनिया में substances हैं, this is matter। अब states of matter are different, for example solid है, liquid है और gases हैं। ये तीन तरह की इसकी states होती हैं। और changing temperature or pressure can change state in which substance exist। So this is important। ये फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर है, ये हाथ भी तो एक मैटर है। एवरीथिंग इज अ मैटर अराउंड अस। किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको किनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी सेज दैट देयर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द मैटर इज सब डिवाइडेड, छोटे छोटे हिस्सों में है। जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से बनते हैं, यानी कि एलिमेंट इज अ फैमिली, name of the family, okay, while atom is a member of the family, an element is name of the family, and compound is two or more elements same or different joined together to form a compound। ये बेसिकली होता है। They produce massive objects such as gas giants, planets, everything is a matter। So modern understanding is based on the idea that all the matter is divided into small particles। ये basic है इसकी take home message। Each element is composed of its own type of atom। वो मैंने I already explained कि element is the name of the family, उसके वो members होते हैं atom। Atoms are different elements combined together to make a compound। ये बता दिया। So this is the take home message, the key points in whole the story। Rest we can just read it। This idea that all substances consist of very small particles began to explain the structure of three different states of matter। मतलब ये भी एक three different states of matter, ये एक take home message है। The different levels of freedom of movement of the particle explain some of the different features of three states। So here figure 1.14 illustrate the basic feature of three states we discussed earlier। ये एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अब आपको पता सॉलिड चीजें मूव नहीं करती हैं। लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस आल्सो स्प्रेड थ्रू कंटेनर, इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि ये है डेफिनेट, डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। एंड सॉलिड इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इसमें कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट इसके क्या है किनेटिक थ्योरी के? These are the main points। All matter is made of a very small particles। Different substances contain different type of particles such as atoms, and then molecules or ions। The particles are moving all the time। हमेशा particle move करते हैं। The higher temperature, the higher the average energy of the particle। Okay, so these are take home messages। The freedom of movement and the arrangement of particle is different for three different states of matter। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
को यहाँ पे इस ऊपर वाली फिगर में एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड, एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, हियर वॉल्यूम इज डेफिनेट बट shape is not definite. Here volume and shape both are not definite. So ये उसके रिलेटेड पॉइंट ही है, जस्ट उसको दूसरी तरफ एक्सप्लेन किया. The presence of a gas is produced by atoms, the molecule of the gas heating the walls of the container. The more often the particle collide with the walls, the greater the pressure. तो चूंकि इसमें वॉल्यूम गैस के अंदर वो फ्री स्टेट में होते हैं तो कोलाइड करते रहते हैं और इरेगुलर होते हैं, ठीक है, स्प्रेड वेरी फार अवे एंड एबल टू मूव रैंडमली, रैंडम मूव करते हैं. On heating the particles move faster and the liquids expands. In the liquid, some particles have enough energy to escape from the surface. Liquid में कुछ escape कर जाते हैं. As the temperature rises, more particles have enough energy to escape. टेम्परेचर के साथ उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो escape हो जाते हैं. इवेपोरेशन इसी वजह से फास्टर होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर. At the boiling point, the particles have enough energy to break the forces attracting them. The particles move very fast and separate from each other. The liquid boils. तो बेसिकली ये देखना है कि जब कारों में देखा होगा व्हेन वी बॉयल सम, व्हेन वी गिव हीट, एक खास टेम्परेचर के बाद वो जंप करता है लिक्विड. तो बेसिक होता क्या है कि पहले जो फोर्स उनको बाइंड की होती है, करीब रख रही होती है, वो फोर्स वीक हो जाती है और जो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी जो उनको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. इस वजह से वो जंप करता है, वो उसको तोड़ना चाहता है, उससे निकलना चाहता है उस स्टेट से. द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर क्लोजली पैक टुगेदर, बहुत क्लोजली पैक होते हैं. इन एन इरेगुलर अरेंजमेंट एबल टू मूव अराउंड पास्ट ईच अदर. ठीक है. और सॉलिड के अंदर when temperature is raised the particles gain energy and vibrate. पहले वाइब्रेट करते हैं इसमें क्योंकि इसमें डायरेक्टली वो मूव नहीं कर सकते. the particles occupy more space, this causes solid to expand. तो स्पेस उसकी ज़रूरत हो जाती है, then it can expand. Eventually the particles have enough energy to break the forces holding the lattice together. lattice ये होता है क्योंकि सॉलिड में सीक्वेंस में होते हैं तो उसको लैटिस के अंदर होते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं. दे कैन मूव अराउंड द सॉलिड मैट्स. द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड आर पैक्ड क्लोज टुगेदर इन ए रेगुलर अरेंजमेंट और लैटिस. रेगुलर अरेंजमेंट को ही लैटिस कहते हैं. नॉट एबल टू मूव फ्रीली बट सिंपली वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजीशन. थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, इसकी वो एक छोटी सी जगह पे इतने ज़्यादा आइटम होते हैं. तो बेसिकली जो जिसको हम जर्रा कहते हैं, दाना छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारे आइटम हैं. Highly structured, ordered microscopic arrangement solid can produce the regular crystal structure seen in this. ये regular crystal structure है, यानी कि लैटिस में है, periodic है. In a solid, the particles are packed close, बहुत ज़्यादा close होते हैं. The particle cannot move नहीं कर सकते. ऊपर वाली बातें फिर उसको repeat कर रहा है. They simply vibrate about fixed position in the regular arrangements. Liquid में still close together होते हैं, but how they can now move. वाइब्रेशन से अगली स्टेज होती है क्योंकि relatively freedom होती है. Move about past each other. The separation in the particle is much greater in a gas. गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और far away होते हैं और बहुत ज़्यादा random movement होती है. The ability of the particle to move in the liquid and the gas phases produce their fluid properties. The particles are very widely separated in a gas but are close together in liquid solid. The space between the particles is called intermolecular space. ठीक है. The space between atoms of the molecule in liquid or gas small but relatively very large in gas molecule बहुत होती है.
In liquid, this space is very much smaller. As a result, the liquids are not very compressible. तो ये कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि गैस को एक किलो एक कंटेनर में भी डाल सकते हैं, 10 किलो भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड जितना गिलास का वॉल्यूम होगा उतने में ही डलता है, इसलिए क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं होता, मूवमेंट उनको मिल जाती है। Changing the external pressure on a sample of a gas produces a change in volume that can easily seen. An increasing external pressure produces contraction in volume. जिस तरह घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर या गुब्बारे के अंदर भी, ठीक है, हमने देखा द गैस इज कंप्रेस्ड, डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर ऊपर से दबाव कम कर दें तो वो चीज फैल जाती है। द गैस एक्सपेंड्स, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज आल्सो अल्टर्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर। An increase in temperature of a gas produces an increase in volume. The gas expands. Decrease in temperature produces contraction in volume of the gas. The movement of of particles in a liquid also helps to explain evaporation from the surface of the liquid. Some of the particles are moving faster than others at the surface. These faster moving particles may have enough energy to escape into the gaseous state. ये अगर देखें तो द फर्स्ट मूविंग पार्टिकल एस्केप, ये ऊपर वाले निकल जाते हैं, नीचे वाले नीचे रह जाते हैं। ये कूलिंग कर्व है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम अभी करेंगे कि टाइम के साथ टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है, ठीक है, तो गैस पहले इसको कूल करेंगे, ये टेम्परेचर है, ऊपर टेम्परेचर डाउन करें तो गैस एक पॉइंट के बाद लिक्विड बन जाती है, फिर लिक्विड फ्रीज होता जाता है टेम्परेचर डाउन होने से, ठीक है। फिर फ्रीजिंग लिक्विड एंड सॉलिड बोथ प्रेजेंट, यहाँ पे बोथ होते हैं, फ्रिज में देखा होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद सॉलिड होता है और उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ सॉलिड बनना शुरू होता है। यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। The fact that the space between the rapidly moving particle in a gas is much greater than in the other two states of matter explains why the volume of a gas is much more easily changed by condition of temperature and pressure. Pressure automatically change होता है. If the temperature is raised, then the gas particles move faster and there is less chance of interaction between them. आपस में interaction कम करेंगे ना. The gas particle move faster and more freely and occupy greater volume. And the opposite is true if temperature is lower. The particles are moving more slowly, they are more likely to interact with each other and move together to occupy a smaller volume. Okay, so changes in pressure also affect the volume of a gas sample. An increase in pressure pushes the particles closer together, meaning that the moving particles are more likely to interact with each other and move closer together. The opposite is true when the external pressure is lowered. The particles occupy a greater space and interaction between particles are less likely. The way the particles in the three states are arranged and interact with each other also helps to explain the energy changes involved when temperature is heated or cooled. Figure 1.3 summarizes the energy changes that take place at different stages of cooling experiment. तो ये this is I already explained. अब इसमें है कि the cooling of gas gives rise to a sequence of changes during which the particles move less rapidly or and interaction more strongly with each other. जब क्लोज होंगे कूल होंगे तो इंटरेक्ट आपस में करेंगे. The substance passes through the liquid state. Liquid state से पहुंचती है, eventually becomes solid, solid बन जाती है. Over the course of experiment, the temperature falls.
temperature कम हो जाता है. The graph shows two periods during which temperature remains constant. These regions are the time when first condensation and then freezing take place. तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये देखें. एंड हियर आल्सो डज नॉट चेंज. In region A, the temperature is falling, the energy of the particle decreases, the particles move more slowly and interact with each other more strongly. The particles begin to come together to form the liquid. As the intermolecular forces increase between the particles, energy is given out. मतलब ये चीज जब ठंडी होती है, कूल होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, तभी तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ मूव करती है, लिक्विड बनती है. तो उस वक्त एनर्जी उसमें से निकलती है जो पहले काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मौजूद होती है. The results in the temperature staying constant until the gas is completely condensed to liquids. Once the liquid is formed, the temperature starts to fall again. The liquid cools, the particles in the liquid slow down, eventually solid begins to form. The forces holding the solid together form, the energy is given out. While the solid is forming, this release of energy keeps the temperature constant. तो चूंकि उसमें से एनर्जी निकल रही होती है, तो इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता. टेम्परेचर तब बढ़ता है जब काइनेटिक एनर्जी, जब उसके अंदर एनर्जी ऐड हो रही होती है, नेट एनर्जी ऐड होती है. The temperature stays the same until freezing is complete. After the solid has formed, the temperature falls again. The particle in the solid vibrate less strongly as the temperature falls. The key points about the process taking place during condensation and freezing are, yet take home messages. These are the take home messages. Okay, here the take home messages. As the particles come closer together, new forces of interaction take place. This means that energy is given out of during these changes. Therefore, the temperature remains unchanged until the solid is strong, is totally formed. Energy is given out during these changes, condensation or freezing, or exothermic changes. इनको exothermic changes कहेंगे. ठीक है. A process or chemical reaction in which heat energy is produced and released to the surrounding. Delta H for an exothermic changes has a negative value. क्योंकि उसमें करीब आ जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी रिलीज हो जाती है एज ए एक्सोथर्मिक फोर्स चेंजेस के तौर पे, एनर्जी के तौर पे. कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड वुड गिव ए हीटिंग कर्व भी इसकी अपोजिट होगी, राइजिंग होगी. इन दिस केस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग melting or boiling में temperature change नहीं होता. At these stages energy has to be put into overcome the forces between the particles. इसमें opposite होता है, जो energy देते हैं वो उनकी जो attractive forces already मौजूद होती हैं उनसे fight करती है, उनको खत्म करने में वो energy लग जाती है, तो इसलिए temperature नहीं बढ़ता. टेम्परेचर एक रॉ चीज होती है, मतलब फोर्सेस के दरमियान वो एक्सप्रेशन होता है कि वो एनर्जी वाइब्रेशन उसको काइनेटिक एनर्जी देती है. द एनर्जी पुट इन ब्रेक्स these interactions and particles are able to move more freely and faster. और फिर उसको खुद ब खुद फास्टर होने की मूवमेंट हो जाती है. जब हीट एनर्जी जो देंगे तो वो उसकी ऑलरेडी फोर्सेस जो एटम के दरमियान इंटरेक्टिव होती हैं वो खत्म करती है. As energy has to be put in during these changes, melting, evaporation and boiling are endothermic changes. तो ये उसका अपोजिट है, एंडोथर्मिक चेंजेस होंगे जब एनर्जी उसको दी जाती है. तो इसकी डेफिनेशन प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन that acts in heat from the surrounding. Delta H for endothermic change has a positive value. तो delta H को positive value देगी endothermic को. What are the forces that hold a solid or liquid together? They must be attractive forces between the particles. They are the forces that act when a substance condenses or freezes.
Their formation release energy, however, their nature depends on substance involved. For example, substance such as water or ethanol, they act between the molecule present and so are intermolecular force. So next we will discuss the third part of this chapter is uh, mixture of substances and the fusion. तो इसके अंदर we will discuss कि how one substance is dissolved into other and वो आपस में कैसे मिक्स हो जाते हैं मतलब ये नमक है this is solid और this is liquid solvent ये हम liquid के अंदर मिक्स करते हैं तो ये इनके एटॉमिक लेवल पे वो आपस के अंदर इंटरमर्ज हो जाते हैं एटम्स सॉल्यूशन और सोल्यूट जो है ना these cannot be seen as a separate they become one thing जिस तरह हम पानी के अंदर पानी के अंदर नमक डालें तो if we dissolve it properly we cannot differentiate water and the salt. So just let's read this thing. The chemical world is very complex owing to the vast range of pure substances available and to the variety of ways in which these pure substances can mix with each other. यहीं से तो ये वेपन सिस्टम की इजाद होती है क्योंकि दे प्रोड्यूस एनर्जी वेपन सिस्टम जितना भी है जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे रिलीज एनर्जी हीट एंड द फॉर्म ऑफ साउंड ईच मिक्सचर क्या होता है टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन तो इसको मिक्सचर कहते हैं मिक्सचर और सॉल्यूशन में यही डिफरेंस होता है solution mixture solution and the compound ये एक हायरार्की है कंपाउंड के अंदर चीजें केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं सॉल्यूशन में पोलर फोर्सेस के जरिए होती हैं जब मिक्सचर में जस्ट वो प्रेजेंट होती हैं जबकि कुछ भी मिक्सिंग नहीं होती each mixture must be made from at least two parts which may be either solid liquid or gas कोई भी मिक्स कर सकते हैं there are a number of different ways in which three states can be combined in some the states are completely mixed to become one single state of phase इसको technical term में solution कहते हैं is formed when a substance dissolved into another substance जिसमें dissolution की property है used for this type of mixture composed of two or more substances तो solution भी एक mixture की type है but it is a special type जिसमें कुछ फिजिकल फोर्सेस आपस में अटैच होती हैं जबकि आम मिक्सचर इसमें मतलब जस्ट फिजिकल सब प्रेजेंट होती हैं लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें नहीं होती मसलन जिस तरह आप अगर चने और लोहे को इकट्ठा कर दें ठीक है रेत और मिट्टी को इकट्ठा कर दें so this is solids are dissolved in liquid water to produce liquid mixture this is called a salt solution the solid has completely disappeared into liquid in general the solid that dissolved in liquid is called solute. Solid substance that has dissolved in liquid to form a solution. The liquid in which solid dissolve is called solvent. Solvent, this is the definition. The liquid that dissolves the solid solute in to form a solution. What is the common solvent but liquid in organic chemistry that can act as a solvents are called organic solvents like oil जो होता है in other types of mixture, the states remain separate. One phase is broken up into small particles, droplets or bubbles within the main phase. The most obvious example of this is known as suspension of fine particles of a solid in the liquid, such as we often get after a precipitation reaction. Precipitation reaction की definition क्या reaction in which an insoluble salt is prepared from solution of two soluble salts. Solution में क्या होता है? We often think of solution as being made of solid dissolved liquid. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये भी एक type है, but not always. 2/3 of the Earth's surface is covered by a solution of various
salts in water, ये ocean है. The salts are completely dispersed in the water and cannot be seen. However, other substances that are not normally solid are dissolved in seawater. For dissolved gases, oxygen, carbon dioxide are important for life to exist in ocean. तो ये भी dissolve होती हैं. A closer look at solution. Water is the commonest solvent in use, but other liquids are also important. Most of these other solvents are organic liquid, such as ethanol, propanol, trichloroethane. These organic solvents are important because they will often dissolve substance that do not dissolve in water. ऐसा भी होता है कि एक चीज वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी दूसरे में डिजॉल्व हो सकती है बट इफ सबस्टेंस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इट इज सेड टू बी सॉल्युबल इट डज नॉट इट इज इनसॉल्युबल less obvious but quite common are solution of one liquid in another when alcohol mixes completely in water तो ये जो लिक्विड्स होते हैं ये अल्कोहल वाला वाटर में लोग पीते हैं अल्कोहल एंड वाटर आर कम्प्लीटली इमिसिबल मिसिबल मिसिबल होते हैं लेकिन सेपरेट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग evaporation के जरिए दिस मीन दैट दे मेक अ सॉल्यूशन alloys are similar mixture of metals alloys भी ये solid के mixtures होते हैं though we don't usually call them solution they are alloy कहते हैं लेकिन है होते हैं ये solution ही है they are made by mixing the liquid metal together before solidifying the alloys solubility of solid in liquids. If we try to dissolve a substance such as copper 2 sulfate in a fixed volume of water, the solution becomes more concentrated as we add more solid. डालते जाएं solution बनता जाएगा. A concentrated solution contains a high proportion of solute. Dilute solution contains a small proportion of solute. Dilute में थोड़ा होता है, concentrated में बहुत ज़्यादा होता है. If we keep adding more solid, point is reached जब we no more will dissolve at that temperature. This is saturated. Saturation का point आ गया, further नहीं हो सकता. Resolution. To get more solid to dissolve, the temperature must be increased. The concentration of solute in a saturated solution is the solubility of the solute at the temperature. The solubility of more solid temperature के साथ solubility बढ़ जाती है. This is the take home point. The process of crystallization depends on three observations. When a saturated solution is cooled, solution cannot hold less solute at the low temperature and some solutes crystallizes out. ये भी एक है कि टेम्परेचर एक सर्टेन सॉलिबिलिटी सर्टेन टेम्परेचर पे होती है अगर उससे कूल करेंगे तो सार नीचे बैठ जाएंगे solubility of gases in liquid unlike most solids gases become less soluble in water as temperature rises टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस निकल जाती है जिस तरह ये पेप्सी या कोक या ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स इनमें होती है The solubility of gases from the air in water is quite smaller, थोड़ी होती है, but the amount of dissolved oxygen is enough to support fish and other aquatic life. तो होती ज़रूर है soluble gases उसके अंदर. The solubility of gases increase with pressure, atmospheric pressure की वजह से ही ये gases dissolve होती हैं समुद्रों में या इसमें दरियाओं के पानी में. Sparkling drinking contains carbon dioxide dissolving under pressure. ये देखिए जब हम फ्रिज से गैस बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है प्रेशर कम हो जाता है या उसको गर्म भी करो तो भी गैस निकल जाती है इसलिए ठंडी बोतलें ज़्यादा बिकती हैं महंगी क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन ऑफ गैस ज़्यादा होती है इसलिए मज़ा ज़्यादा होता है they fizz when the pressure is released by opening the container they go flat and the container is left to stand open and more quickly left to stand in a warm place diffusion in solids. Some of the earlier evidence for kinetic model of the states of matter came from the observation on diffusion. ये initial था. Diffusion क्या होती है? The process by which different fluid mix as a result of the random motion of their particle. Particle की random motion में mix होती है इसको diffusion कहते हैं. Where particles spread to fill the spaces available to them. The main ideas involved in diffusion. ये तीन take home messages हैं. सबसे पहला क्या particle move from region of higher concentration to a region of lower concentration. Eventually, the particles are evenly spread. Their concentration is the same throughout.
The rate of diffusion in liquid is much slower than in गैस लिक्विड में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है गैस से इसमें सॉरी स्लोअर होती है जो गैस में वो रैपिडली मूव करते हैं इसलिए जल्दी हो जाती है द डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड एज द पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सॉलिड में तो नहीं होगी ना क्योंकि उसमें तो चीज पूरी मूव करती है पार्टिकल्स मूविंग डिजॉल्विंग ये एक एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट की यहाँ पे डाला तो ये डिजॉल्व होना शुरू हो गया डिफ्यूजन की वजह से A few drops of liquid bromine are put into gas jar and the lid is placed. The liquid bromine evaporates easily. Liquid bromine is highly volatile. After a short time, the brown gas begins to spread from the jar. The jar becomes full of brown gas. The bromine vaporizes for our sensing of the world and around us. It is the way that smells reaches. तो ये देखें ये पहले था इधर कुछ नहीं था फिर स्लोली स्लोली इधर गया The atom molecule gases move at high speeds. We are being bombarded constantly by nitrogen and oxygen molecules in the air, which are traveling at about 1800 km per hour. However, these particles collide very frequently with other particles in the air, many million collisions per second, so their path is not direct. These frequent collisions slowly down overall rate of diffusion from one place to another. The pressure of a gas is the result of collision of fast moving particles with the walls of the container. नॉट ऑल गैसेस डिफ्यूज एट द सेम रेट ये एक इंपॉर्टेंट है अब इसमें देखना है मॉलिक्यूलर वेट का क्या रोल है द स्पीड एट विच ए गैस डिफ्यूज डिपेंड्स ऑन द mass of the particle involved at the same temperature molecules that have a lower masses on the average faster than those with higher mass this is shown by the experiment the ammonia and the hydrochloric acid ammonia or hydrochloric acid when they meet produce a white smoke ring of ammonium chloride. This smoke ring is made of fine particles solid ammonium chloride. तो ये दोनों अमोनिया इधर था हाइड्रोक्लोरिक इधर था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बस इतना सा डिस्टेंस कवर किया जब अमोनिया यहाँ से चल के यहाँ गया क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कम है इसलिए ज़्यादा फास्टर मूव किया इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या निकलते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से heavier gases particle move more slowly than the lighter particles at the same temperature. Larger molecules diffuse more slowly than the smaller molecules. The rate of diffusion is inversely related to the mass of the particle. The average speed of the particle increases with increasing temperature. तो ये एक हम मस्त चीज experimental skills. अब इसमें we are going to investigate the diffusion कैसे होती है liquids. So this is the experiment, the process of diffusion in liquid. डिफ्यूजन जो है वो शो होगी कि कैसे एक insoluble precipitate बनता है where ions meet in a solution. So what we need these things petri dishes, tweezer, white tile or silver nitrate, potassium iodide, distilled or deionized water, test tubes, silver nitrate solution, or potassium iodide solution or dropping pipettes. इसमें सेफ्टी का भी पर्सपेक्टिव आई प्रोटेक्शन लेनी चाहिए और ग्लव्स यूज करनी चाहिए डोंट नेवर इंजेस्ट देम ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर सिल्वर नाइट्रेट इज क्रोसिव ऑक्सीडाइजिंग क्रोसिव है वो स्किन को डैमेज कर सकता है और हजार्डियस है सिल्वर नाइट्रेट हजार्डियस भी है इन्वायरमेंट के लिए सो द वे सिल्वर नाइट्रेट मस्ट बी poured डाउन द ड्रेन मस्ट नॉट pour डाउन द ड्रेन उसको केमिकल वेस्ट में सेव करना चाहिए गेटिंग स्टार्टेड हम क्या करेंगे बिफोर स्टार्टिंग पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब में हम करेंगे हम 1 cc एक्वा सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और सेम वॉल्यूम हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और हम नोट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पार्टिकुलेट्स कलर
हमने क्या किया, ये पेट्री डिश ली, 1 क्रिस्टल सिल्वर नाइट्रेट यहाँ रखा और 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यहाँ रखा। और और ये वाटर में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। न्यू कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के बीच में नया कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। जब इधर ड्रॉप ये मिलेंगे तो वाटर के अंदर वो नया सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें व्हाट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो कौन सा बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड है और आयोडाइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसमें एक्सचेंज होंगे आयन, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन सकता है। ठीक है। और हमने इसमें इक्वेशन लिखनी है। व्हाट फैक्टर कंट्रोल विद दिस सॉलिड इज फॉर्म इन द पेट्री डिश। एक तो कंसंट्रेशन है, डिस्टेंस है, ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर भी है। Why does the solid not form exactly in the middle of the dish? मिडल ऑफ द डिश में इसलिए नहीं बना क्योंकि एक का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वो हैवियर है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम 39 है। और आयोडाइड जो है वो है, आयोडीन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ आयोडीन 126 है। ओके। तो सिल्वर नाइट्रेट, molecular weight of silver nitrate 169 है। और पोटाशियम आयोडाइड मॉलिक्यूलर वेट 166 है। तो पोटाशियम आयोडाइड 166 है और सिल्वर नाइट्रेट 169। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हैवी है। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है इस तरफ, मतलब ये ज़्यादा ट्रैवल करेगा पोटेशियम आयोडाइड एज कम्पेयर टू सिल्वर नाइट्रेट। जब ऐड करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, यानी कि ये कैटायन जो है वो इस एनायन के साथ और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो बेटा सिल्वर 169.87 169.87 है। और पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, पोटेशियम आयोडाइड 166। Okay, so potassium iodide is 166. So this is lighter than this. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट पड़ा था और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड पड़ा था, तो ये हैवियर है, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे ये रिएक्शन होगा जो डिफ्यूजन होगी। अगर हम पेट्री डिश के अंदर इसको यहाँ पे ड्रॉप रखते हैं, इसका ड्रॉप यहाँ पे छोड़ते हैं। सो दिस इज small amount of liquid bromine is placed in a gas jar, which is then sealed with a lid.
evaporation of the liquid bromine gas take place, bromine liquid to bromine gas में convert हो जाता है. Use the ideas of kinetic theory to explain why, after about an hour, the gaseous bromine molecules have spread to evenly occupy the whole container. ये है फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, ये कलर्ड है, कलर्ड लिक्विड है, ये एयर है, ठीक है, ये डिफ्यूज होगी इसमें से, तो ये पोरस है, तो ये स्प्रेड हो जाएगी इधर, ठीक है, एयर इनसाइड चली जाएगी, तो उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा. So use the idea of kinetic to explain why, after about an hour, gaseous bromine molecules have spread to evenly occupy the whole container. Simply diffusion की वजह से it will spread. The teacher carried out a glass demonstration on diffusion similar to that using ammonia and hydrochloric acid. Figure 1.21. कौन सी 1.21? This one. 1.21 ammonia hydrochloric acid. Okay. How they replace the ammonia with methylene, which reacts in a similar way to the ammonia. Note that Mr is the relative molecular mass of the substance. Methylene 21. Where should you predict the position of the smoke ring to be in this experiment? Explain your answer. तो अमोनिया को उसने मिथिलीन से किया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिमिलर है. So we will go to whiteboard. Here is a methylene with 31. Here is a HCl with 36.5. Again, HCl is heavier than methylene. Methylamine. This is methylamine. This is not methylene. Methylamine. So this is a methylamine minus 31. तो अगेन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ये रिलेटिवली इस तरफ इधर से ये ट्रैवल करेगी यहाँ तक, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो यहाँ ये कंपाउंड बनेगा. Suggest other gases similar to hydrochloric acid that could replace it in this demonstration. Use to experiment to find a possible answer. So this is the homework. You guys can do it. It's just a knowledge question. Experiment comparing the rate of diffusion different gases can be done using the position figure 1.23. यहाँ पे भी हो सकता है. Gas diffusion through porous pot A with air inside and outside the pot B, the hydrogen outside, air inside the pot. Hydrogen outside, air inside the pot. इसके अंदर air है, hydrogen है, तो इस तरह से भी ये बाहर निकलेंगे, ये वाली ज़्यादा, इस तरह से एक्सपेरिमेंट हो जाता है. तो ये लेवल ऊंचा हो सकता है, ये एयर थी. Okay, this is the activity. A cylinder of porous pot is used through which gas molecules are able to pass. Any change in pressure in cylinder pot shows itself in a change of liquid level in the inside tube, and there is air both inside and outside the pot. The liquid levels are the same.
Why the levels of liquid change when hydrogen is placed outside the porous pot cylinder. जब हाइड्रोजन प्लेस हुई तो हायर लेवल था ना, तो उस वो डिफ्यूज होकर अंदर आई, इस वजह से ये लेवल ऊपर चला गया। इसमें लेवल सेम था चूंकि दोनों तरफ एक ही प्रेशर था, तो इसलिए लेवल सेम। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज kinetic model of matter. This is just uh, recall. Modeling the arrangement of particles in a solid, liquid, or gas is one way to help understand the properties of different states of matter. Working in a small group, create a model or visual representation that explains the movement of particles in different states. Think about what could you use to represent the particles over the marble in a tray dish, circular pieces of card on plate, groups of people, symbols, perhaps. How will you arrange the particles demonstrate solid liquid gases? Definitely solid में हम करीब करीब रखेंगे, अरेंज करेंगे, लिक्विड में हम दो थोड़े से दूर रखेंगे, और ऑर्डर नहीं होगा उनमें, और गैस में ना ऑर्डर होगा ना करीब करीब होंगे। How would you represent the movement of the particles? इसको वाइब्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मूव करके। यू कैन diagram or display should answer three of the following questions. Why is it takes time for a solid to melt? Because molecular forces are more stronger. Why do solid not diffuse over the normal time period? Because molecule में जो इंटरेक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको वो वाइब्रेट तो हो सकता है, लेकिन मूव नहीं हो सकती वो। What is the difference about substances? That means that they each have different melting point. What is the difference about substances? That means they have different melting point, because उनके अंदर intermolecular forces different होते हैं, interatomic forces। Different substances also have different boiling point. Is this the reason for this similar to why they have different melting point? No, उसमें intermolecular forces ही बेसिकल होती हैं, बेसिकली तो सेम ही है, लेकिन उसमें सॉलिड में स्ट्रक्चर को ओवरकम करने के लिए होती हैं, जबकि लिक्विड के अंदर तो जो डिफरेंट जो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उसको ओवरकम करने के लिए यूज होती है। बेसिकली तो फोर्सेस नहीं एटम के तरह। व्हाई इज इट दैट यू कैन फील ए लिक्विड कूल इवन evaporate in your hand? क्योंकि वो एनर्जी लेता है अपने हाथ से, आपके हाथ से, इसलिए कूलिंग फील होती है। After you have taken time to answer the question, each group should choose one of the question. Reflection. To understand the ideas introduced in this chapter, you need to be able to think about the behavior of the particles smaller than you can see. What strategies could you use to help you to visualize particles such as atom or molecule? Definitely, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इस तरह की चीजें। Are there any experiment which could give you clues to existence some yes, these हम लेजर एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं या एक्सरे से भी कर सकते हैं। How useful do you find the different approaches? It's good. So this is all about the summary. Okay, the project, exam style questions. So this I will just repeat the summary. Summary is very important. It will give overview. We will just read these things. There are different physical states in which a substance can exist: solid, liquid, gas. The structure of solid, liquid, gases can be described in terms of particle separation, arrangement, and emotions. Different changes in state can take place, including melting and freezing, evaporation, condensation, and boiling. Change of state can be produced by changing conditions of temperature and of pressure. Pure substances have precise melting and boiling points. The kinetic particle model, इसलिए चीजों की प्योरिटी चेक करने के लिए भी melting and boiling point find किया जाता है। The kinetic particle model describes the idea that the particles of substance are in constant motion, and the nature and the amount of motion of these particles differ in solid, liquid, or
gases. Changing the physical state involves energy are being absorbed or given out. The temperature of the substance staying constant while the change takes place, as illustrated by the experimental construction of the cooling curves. Changes in temperature or the external pressure produce changes in volume of gases, which can be explained in terms of the kinetic particle theory. And if you in a liquid and gases, the spread of particle to fill all of the space available. The rate of diffusion of a gas is dependent on the molecular size, with the molecules of lower mass diffusing more quickly than those of the higher mass. So that's all about.